Hello everyone, my name is Vishal. Welcome to this week's weekly market view for Monday the 22nd of August to Friday the 26th of August 2022. Let's get started. Alright, so let's get started with the Nifty analysis. Let's start with the monthly chart, and if you look at the monthly chart, the prices are still holding on to this monthly level of demand, and we are seeing this bounce coming out of the monthly level of demand. There is some selling pressure that has come on these wicks over here, and if you look at the weekly, this was that supply zone on the weekly chart, and today we did see or witness some selling pressure coming in from this higher time frame. Now whether this can be a potential turning point, only time will tell, and we'll also have a look at the options data to let us know a little bit more about the certain turning point in the market, right? So let's look at the daily chart, and on the daily chart, if I just zoom onto the daily chart, we are seeing this bearish candle. Now we do have a couple of demand zones on the way down. We do have this level of demand where in fact the prices have halted today, and we'll have to just closely watch this level in the coming week. But if you're going for the real level of demand, there is a nice level of demand which is located at the bottom. So in case if Nifty corrects and corrects pretty strongly from this above level of supply, and here you can also see that Nifty is reacting from this pivot area. So generally we tend to get strong reversals from these areas, especially at the top. But 17,157 to 17,017 is a level to watch out for. Just below this demand, we have another level of demand where Nifty could possibly take a little bit of a halt before deciding whether it wants to turn or go further down. But more or less, we should expect to see a little bit of a downside to a consolidation now that the market has rallied. It's bound to see some kind of a corrective move to the downside. Any kind of corrective move to the downside will be a buying opportunity, since the indexes are more or less designed to move to the upside in the long run. So that's the story on the Nifty, and as we can clearly see, if you look at the volatility tool at the bottom, the options premiums are still deflated. The volatility has significantly picked up today, obviously because of the market falling down. There has been a volatility spike. So options traders still should be looking at buying options and not selling options at this point in time on the Nifty. Let's go on to the Bank Nifty chart, and if you look at the Bank Nifty chart, we just remove all the tools here. So same picture, monthly demand zone holding and holding pretty strongly, right? And if you look at this area here, this is that demand zone which is holding on to this current level here. But there is also this one more gap level of demand that might come into play next week. So this is a level to watch out for, 38,366 to 38,121. And if you look at the option premiums, volatility has risen and has risen to zone 2, which also indicates that premiums are still deflated on Bank Nifty as well. So again, focus more on debit strategies or buying options rather than selling options, because option premiums are pretty deflated at this point in time. So these are the key levels to watch out for on the Bank Nifty in the coming week. Let's look at the USD/INR. And the USD/INR is moving up, indicating that there is a possibility of Nifty weakening in the coming trading sessions. Even as of now, the index is trading high, and it does have this area over here which it needs to break before making a new high. So let us see if USD/INR is able to break the 80 handle once again and then try to inch to the upside. If that happens, then there is a possibility of
significant correction coming into the Nifty since the USDINR and Nifty are inversely correlated markets. So just for some of our participants who are a little comfortable in Hindi, so I will just make sure that they understand the levels in Hindi as well. So जैसे हम देख रहे हैं कि मंथली डिमांड जोन अभी भी होल्ड कर रहा है निफ्टी के ऊपर. अभी आज थोड़ा सा बेरिश प्रेशर आ गया है निफ्टी, बिकॉज निफ्टी सप्लाई जोन से रिएक्ट कर रहा है. और आज हमने कई दिनों के बाद एक बेरिश कैंडल बनाई है डेली चार्ट के ऊपर. क्या ये ट्रेंड अगले हफ्ते कंटिन्यू हो सकता है? बेशक इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे करेक्ट हो सकता है. 17,565 से लेकर 17,440 ये जो लेवल है ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है अगले हफ्ते के लिए. सो ऑल ट्रेडर्स ये दोनों लेवल्स पे आप बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर से बाउंस दे सकता है. अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पे भी दो लेवल बन गए हैं आज. ये जो 68,370 का लेवल है और दूसरा लेवल करीबन 39,000 का है. ये क्रूशियल लेवल है. फ़िलहाल मार्केट अभी इस लेवल को होल्ड कर रहा है, बट अगर मार्केट ये लेवल को ब्रीच करता है देन देयर इज़ अ वेरी लाइकली पॉसिबिलिटी कि ये जो 38,400 का जो लेवल है ये टेस्ट हो सकता है और यहाँ से मार्केट फिर से बाउंस दे सकता है. दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शंस की वॉलेटिलिटी जिसको हम गेज करते हैं वो काफ़ी लो है. तो अगर आप ऑप्शंस बाइंग करते हैं तो वो बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ही लो है अभी. अगर हम USDINR देखते हैं, USDINR वापस से ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है. 80 जो लेवल है वो बहुत ही क्रूशियल है USDINR के लिए. और जैसे कि मैंने अंग्रेज़ी में बताया था कि USDINR और निफ्टी जो दोनों होते हैं वो इन्वर्सली कोरिलेटेड होते हैं. इन्वर्स कोरिलेशन का मतलब है अगर USDINR ऊपर जाता है तो निफ्टी नीचे आता है. तो अगर हम इस कोरिलेशन को फॉलो करते हैं या सस्टेन करते हैं तो शायद हो सकता है कि अगले हफ्ते निफ्टी में थोड़ा सा और करेक्टिव मूव आ जाए नीचे की तरफ. For this week, the sector that we have identified is the IT sector. So let's quickly have a look at the IT sector. अगर हम IT sector को देखें तो IT sector अभी फ़िलहाल मंथली डिमांड जोन से बाउंस हो रहा है और थोड़ा सा अपसाइड लग रहा है IT सेक्टर में. थोड़ा सा पेशेंटली हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो एकदम से बाई नहीं करते हैं, वो अक्यूमुलेशन करते हैं और अक्यूमुलेशन होने के बाद ही प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती है. दैट इज़ व्हाट वी आर विटनेसिंग ऑन द IT सेक्टर राइट नाउ. और अगर हम वीकली चार्ट भी देखें, वी लुक एट द सेम चार्ट ऑन द वीकली, we see that there is a little bit of buying pressure. Now this is some consolidation that is happening, and this could eventually be a rally base rally, and markets could push towards the 33,483 handle. On the daily chart, there are some key levels of demand around this area on the IT sector, but let's quickly have a look at Infosys, which belongs to the IT sector. और अगर हम Infosys को देखते हैं तो Infosys भी मंथली डिमांड जोन से बाउंस हो रहा है. अगर आपका एक लॉन्ग टर्म व्यू है Infosys पे तो Infosys पे अपसाइड नज़र आ रही है. अगर डॉलर यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ता है दैट विल हेल्प Infosys, सो दैट विल ऑल्सो हेल्प द IT स्टॉक्स टू मूव अप. एंड वन की लेवल टू वॉच आउट ऑन Infosys इज दिस सप्लाई जोन, राइट. सो अगर आप Infosys पे 1400 लेवल पे ऑलरेडी लॉन्ग है या आपने बाय किया है तो 1725 का एक आप टारगेट रख सकते हैं Infosys के ऊपर. और दूसरा टारगेट जो Infosys के ऊपर आप रख सकते हैं वो है ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप लेवल, जो कि 18,010 वाला जो लेवल है. तो अभी फ़िलहाल IT सेक्टर में शॉर्टिंग नहीं करना चाहिए. अगर कोई भी आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है नीचे की तरफ आप बाय कर सकते हैं. और some key levels to watch out for on Infosys with a slightly positional view, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप
लेवल डिमांड है, थोड़ा सा दूर है लेवल अभी करंट मार्केट प्राइस से, बट डिपेंडिंग ऑन द मार्केट एंड इट्स व्यू, मार्केट कैन ईजिली गो डाउन and it might come down towards this level. So 1522 is going to be a very very crucial level for Infosys. अगर आपको एक पोजिशनल व्यू से Infosys को बाय करना है तो ये लेवल एक ठीक ठाक लेवल हो सकता है. So this is the key level on Infosys to the long side. Let's look at the options data since it's going to be the monthly expiry. So I have this data open in front of me here. I will go through this data, and here today we can see that there has been some heavy call writing and some heavy call build up on the 18,000 call option, which is indicating that markets are a little bit bearish. This was seen in the morning itself. Not much was seen on the bank nifty data. अगर हम bank nifty का data देखते हैं तो इतना क्लू नहीं मिल रहा था हमें सुबह, लेकिन डेफिनेटली हमें ये पता चल रहा था कि 39,500 पे जो कॉल बिल्डअप है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, और उस समय पे पुट बिल्डअप भी हो रहा था 39,500 पे, इंडिकेटिंग कि थोड़ा सा बुल्स और बेयर्स के बीच में फाइट हो सकता है. बट इवेंचुअली द बेयर इज वन द बैटल, और 39,500 से मार्केट केम ऑल द वे डाउन एंड इट ब्रीच 39,000 लेवल्स. अगर हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हैं सो 38,000 अभी एक नया सपोर्ट लेवल बनता है, क्योंकि यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग हमें दिखाई दे रहा है. सो अगले हफ्ते के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो 39,000 से लेकर ऊपर की तरफ 39,500 और 39,000 से लेकर नीचे की तरफ 38,000 का रूम बन रहा है इस मार्केट पे. थोड़े ऑब्स्टिकल्स आएंगे बीच में, 38,500 का एक लेवल है, but अगर 38,500 breaks to the downside, then there is a very likely possibility that we might test 38,000 levels. So just watch out for some key levels, and seems like the next week or the last week of the month, which is the expiry month, is going to be very very exciting. I hope you enjoyed the analysis. If you like our analysis, please do subscribe to our channel on YouTube. Looking forward to see you next week with some more analysis. Take care everyone. Have a safe week. Bye-bye. This should not be treated as a recommendation. Please conduct your own analysis or consult a financial advisor before investing.